the commencement of our third scientific session of ICDS with great enthusiasm and the motivation to learn something new. This session relies on the subject, the power of looks, which relates to society and unrealistic beauty standards. Our first speaker is Dr. Salim Gauri. He is an MBBS graduate of King Edward University and an experienced consultant in clinical and aesthetic dermatology with great experience in the field. He is the founder of Dermatology Department of Social Security Hospital and worked there as a consultant, chief consultant, senior consultant, and the head of Department of Dermatology for more than 30 years. Sir, I request you to please come on stage and share your knowledge about ethical considerations in cosmetology. मोहम्मद सलीम गौरी के नाम से कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस एंड एथिकल एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Before I go to the topic, there have been lots of discussion about halal and haram. I just want to mention couple of hadiths about it. एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह, और कुछ चीज़ें इनके दरमियान मुश्तबा हैं, तो जो इन मुश्तबा चीज़ों से दूर रहा उसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली। किसी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक और हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो और तंगी ना करो। और एक और मैं कुरान की आयत के हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा कि कुलू वशरबू वला तसरफू, कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये दो तीन चीज़ें जहन में रख लें तो हलाल और हराम बहुत वाज़ेह हो जाता है। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। इसको आगे करेंगे या मुझे देंगे वो स्लाइड फॉरवर्ड? कौन सा है इसमें आगे? नहीं, ये नहीं चल रहा। I'll start with a hadith. It's described in Muslim. It's narrated on the authority of Abdullah ibn Masud that Messenger of Allah ﷺ observed, "He who has in his heart the weight of a mustard seed of pride shall not enter paradise." A person amongst his hearers said, "Verily, a person loves that his dress should be fine and his shoes should be fine." The Holy Prophet ﷺ remarked, "Verily, Allah is graceful, He loves grace." Pride is disdaining the truth out of self-conceit and contempt of the people. अरबी के अल्फाज हैं अल्लाहु जमीलु व युहिब्बुल जमाल। जमाल का लफ्ज आप खूबसूरती भी कर सकते हैं। इंग्लिश में तर्जुमा अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका ग्रेस किया है, ग्रेस एंड ग्रेसफुल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। So within certain limits of Islam, if you try to be graceful or make some other person graceful, this is very much desired. और हदीस हैं, मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जिसके बाल बिखरे हुए थे, तो कहा कि क्या इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये अपने बालों को ठीक कर ले। इसी तरह देखा कि जिसके कपड़े खराब थे, बिखरे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये अच्छा खाता पीता शख्स है, तो उससे पूछा कि क्या अल्लाह ने तुम्हें कुछ नेमतें नहीं दी? उसने कहा जी मुझे बहुत मालो दौलत भी दिया और जायदाद भी दी। तो कहा फिर अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर नजर भी आनी चाहिए। तो इस तरह की और भी हदीस हैं जिससे ये पता चलता है कि लुकिंग ग्रेसफुल इज रिक्वायर्ड, इट इज नॉट समथिंग कंडेम्ड,
It is something which is required, but of course within certain limits. This is our topic of today, that cosmetology practice within ethical and Islamic perspective. Our learning outcomes for today are that by the end of this session, the participants will be able to learn the definitions of cosmetology, aesthetics, and medical ethics, understand the basic principles of medical ethics, comprehend the Islamic basis of medical ethics, compare the Islamic and traditional principles of medical ethics, and apply the ethical and Islamic principles on cosmetology practice. So more of the time, I'll be talking of ethics, and then at the end, I'll correlate it to the कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी. ये आपका रुक जाता है काम करते करते, या तो आप नेक्स्ट कर लीजिए. नेक्स्ट. सो व्हाट इज कॉस्मेटोलॉजी और व्हाट इज एथिक्स? नेक्स्ट. Cosmetology is derived from the word cosmetikos, Greek word, is the study and application of beauty treatment. Its branches are hairstyling, skin care, cosmetics, manicures, pedicures, non-permanent hair removal such as waxing and sugaring, and permanent hair removal processes such as electrology and intense pulsed light. This definition is given in Wikipedia. Next slide, please. Aesthetics is a set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty, the branch of philosophy which deals with questions of beauty and artistic taste. Definition is taken from Oxford Languages. Next. Next slide. Next. Aesthetic dermatology is the treatment of the skin, hair, or body that is meant to enhance the appearance of a patient. It is dermatology that is focused on enhancing looks instead of eradicating disease. Next, a branch or subspecialty of dermatology. पीछे चलें जरा. It has become an essential part of dermatology practice over the last few years. Next slide. What is ethics? Moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. A branch of philosophy that deals with the right and wrong. Next, the branch of knowledge that deals with moral principles. Next, also called moral philosophy, the discipline concerned with what is morally good and bad and what is morally right and wrong. So ethics is something which controls our behavior of an activity as well, or any choices. It can involve any system. So what will be medical ethics? Next, please. It's also known as healthcare ethics. At its simplest, it's a set of moral principles, beliefs, and values that guide us in making choices about medical care. Next slide. There's another term used, bioethics, at times synonymously, lekin there may be a little bit of difference. The study of ethical issues emerging from advances in biology, medicine, and technologies. It proposes a discussion about moral discernment in society, and it's often related to medical policy and practice, but also to broader questions as environmental and well-being. Ethics constitute the inner core of professionalism, which is the visible dimension of medical practice. जो हम करते हैं, जो नजर आता है, that is professionalism, लेकिन जो principles इसको govern कर रहे हैं inside, that is ethics. So this is the relation between ethics and professionalism. Little bit about history. You can find the details of medical ethics in Hippocratic Oath, which was written 2500 years back. दरमियान में बहुत से इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं. सिर्फ दो इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. वन इज 1947 न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स एंड न्यूरेमबर्ग कोड. ये क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ज्यूज के ऊपर जर्मनी में हिटलर ने उनको वो कैंप्स में रखा और उनके ऊपर फिर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर किया गया, तो जो ज्यादा टॉर्चर किया गया इट वाज इन द नेम ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स. मसलन कि जी इसका पेन थ्रेशोल्ड कितना है, मुख्तलिफ तरीके से टॉर्चर किया जाता. तो बाद में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो फिर ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स किए गए वॉर क्राइम्स के ऊपर, और इन वॉर क्राइम्स में देखा गया कि ये सारे जुल्म तो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे किए गए हैं. सो देयर वाज Nuremberg trial laid 10 standards to which physician must conform when carrying out experiments on human subjects. इसी तरह there is another Tuskegee study, a notorious study which was carried out in America. ये क्या थी Tuskegee study? 1932 में एक इलाके में हेल्थ अथॉरिटीज ने टस्कीजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये स्टडी प्लान की कि जो ब्लैक मेल्स हैं, नीग्रो मेल्स, उनके ऊपर सिफिलिस का नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज स्टडी किया जाए विदाउट गिविंग देम ट्रीटमेंट. ये उनको बताया नहीं गया.
इस दौरान पेनिसिलिन अवेलेबल हो गई, they were not offered penicillin which was treatment of choice. Study was designed for 6 months, but it continued uninterrupted for 40 years. Imagine 40 years, 1932 से लेकर 1972 तक ये स्टडी चलती रही और किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। फिर ये एक प्रेस रिपोर्ट में हाईलाइट हुई, इसको स्टडी इसके ऊपर कमेटी बनी, कमेटी ने इसे टोटली अनएथिकल करार दे दिया, इसको स्टॉप किया गया। And President Bill Clinton in 1979 officially apologized from black people, officially कि उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई स्टडी में। It's a notorious study and it's a good example of how people or persons can be misused on the name of medical experiments. Tuskegee study. So इसके नतीजे में फिर एक बेलमोंट रिपोर्ट जो है ना वो बनाई गई। This Belmont report was published in 1979, formulating ethical principles and guidelines for protection of human subjects of research. So, एक और मैं आपको बता दूं कि 1979 में ही एक बुक जो है ना वो पब्लिश की गई by Beauchamp and Childress, Principles of Biomedical Ethics. बहुत सी बुक्स उसके बाद शाया हुई। To date, this is still the standard textbook of मेडिकल एथिक्स। इसका 2019 में 8वां एडिशन छाया हुआ है अमेरिका में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? जो स्टैंडर्ड मेडिकल एथिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो 4 हैं। नॉन मेलिफिसेंस, मरीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। बेनिफिसेंस, उसे कुछ फायदा होना चाहिए। ऑटोनॉमी, मरीज को सारी ऑप्शंस दें एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस शुड बी ऑफ द पेशेंट। और ऑटोनॉमी के ऊपर फिर और चीजें हैं। इट इंक्लूड्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रूथ टेलिंग एंड जस्टिस। योर ट्रीटमेंट चॉइसेस शुड बी जस्टिफाइड। इसके अलावा जस्टिस का यह भी मतलब है कि अगर ट्रीटमेंट के जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं तो फिर इसको एक जस्टिफाइड तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स आज भी यही हैं। नॉन मेलिफिसेंस, बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी एंड जस्टिस। एंड ऑटोनॉमी इंक्लूड्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रूथ टेलिंग। इसको अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो एक दो बेसिक चीजें आप समझ लें। द सोर्स ऑफ गाइडेंस इन इस्लाम इज द डिवाइन रेविलेशन, वही। इसके इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के 4 प्रिंसिपल हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कयास। थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ सेक्ट्स में डिफरेंस हो सकता है। आई एम जनरली टॉकिंग कि 4 प्रिंसिपल्स हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा। इजमा इज कंसेंसस एंड कयास इज एनालॉजिकल रीजनिंग। बेसिक सोर्सेज 2 ही हैं, कुरान एंड सुन्ना, और इनके सपोर्ट में कुरान में आयात मौजूद हैं। मसलन सूरह अल हिजर की आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और दूसरा मैंने आपके सामने कहा सुन्ना, तो इसके बारे में भी कुरान में आया। सूरह नजम की आयत 3 और 4, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यन यूहा, कि वो अपने नफ्स से, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते सिवाय इसके कि जो उन पर वही की जाती है। Nor does he speak from his own inclination. It is not but a revelation revealed. So ये 2 बेसिक सोर्सेज हैं गाइडेंस के इस्लाम में, कुरान एंड सुन्ना, द डिवाइन सोर्सेज। फिर मेरा ख्याल है ये जरा पीछे चलेंगे, एक और ज़हन में रखें, ये हैं पर्पसेस ऑफ इस्लामिक लॉ, और ये कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें। ये एथिक्स के पहले जरा ये भी आपके ज़हन में होने चाहिए, पर्पसेस क्या है इस्लामिक लॉ के, मकासद शरिया। प्रोटेक्शन ऑफ दीन सबसे पहले, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट दैट इज माइंड, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजिनी लीनिएज तहफ़्फ़ुज़ नस्ल एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ। और WHO की हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज दी मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये मकासद शरिया में शामिल है कि दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, अकल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत और माल की हिफाजत। अब कुछ इस्लामिक लीगल मैक्सिमम्स हैं, क़वाइद फ़क़ीहा, जो मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड है। मैं सिर्फ वो यहाँ पे, ये क्या है, अ बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिक्ह और जूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ। प्रिंसिपल ऑफ कसद और इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अभी खालिद महमूद याहिया साहब ने बात की। ऑल अफेयर्स आर जज्ड बाय देयर इंटेंशन, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ मॉर्फिन इन टर्मिनल केयर। प्रिंसिपल ऑफ यकीन, सर्टेनिटी, प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। प्रिंसिपल ऑफ जरर और इंजरी, इंजरी शुड बी रिलीव्ड, हार्म शुड बी मिनिमाइज्ड।
principle of zarura or necessity, otherwise prohibited, may become permissible. अभी जिक्र हुआ कुरान में खिंजीर को हराम कहा गया, लेकिन कुरान में ही जहां कहा गया कि जान बचाने की जरूरत है तो मकदूर भर उसको खाया भी जा सकता है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, जरूरा, प्रिंसिपल ऑफ उर्फ और कस्टम और प्रेसिडेंट हैज लीगल फोर्स प्रोवाइडेड इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट शरिया. सो इवन ये हमें जो लोकल कस्टम्स हैं उनका भी ख्याल रखने की जरूरत है, प्रोवाइडेड के शरिया से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते. तो इनकी बेसिस पे इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, तकवा, फियर ऑफ अल्लाह, इट कवर्स ट्रुथ टेलिंग, जस्टिस, ये कि मैंने खुदा को जवाब देना है. इट कवर्स अकाउंटेबिलिटी एज वेल, हुदूदुल्लाह, लिमिट सेट बाय अल्लाह. ये स्टैंडर्ड मेडिकल एथिक्स में शामिल नहीं है. दिस इज समथिंग विच इस्लाम टेल्स यू टू ऑब्जर्व हुदूदुल्लाह और लिमिट सेट बाय अल्लाह. इखलास, सिंसियरिटी, it includes beneficence and non-maleficence. Ikhlaq, morality, it includes autonomy, informed consent, confidentiality. एहसान, ये भी शायद स्टैंडर्ड मेडिकल एथिक्स में नहीं है. एहसान का मतलब डू गुड भी है एंड परफेक्शन भी है, हम आगे देखेंगे, और प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी है. और अयादा, विजिटिंग द सिक, बड़ी इंपॉर्टेंस आई है. इट कवर्स द फॉलो अप ऑफ द पेशेंट. तो अब हम मजीद आगे चलेंगे, फिर वो रुक गया. नेक्स्ट स्लाइड. जरा हम कॉस्मेटोलॉजी को इन प्रिंसिपल्स के रेफरेंस में देख लें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आगे, नॉन मेलिफिसेंस, नो हार्म, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल. कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आपने करना है, यू हैव टू मेक श्योर सबसे पहले कि मरीज को नुकसान ना हो, फिजिकली भी ना हो, साइकोलॉजिकली भी ना हो और फाइनेंशियली भी ना हो. हम जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स करते हैं अच्छे खासे एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर कि मिनिमम कॉस्ट के साथ जो पेशेंट को जरूरत है वही प्रोसीजर्स किए जाएं, किसी किस्म का भी हार्म ना हो पेशेंट को. सॉरी, फिर आगे चला गया. दूसरा, ये मेरा ख्याल हमने कर लिए थे. इखलाक और मोरालिटी, रिस्पेक्ट एंड ऑनर और डिग्निटी, पीछे मेरा ख्याल है, इसको चले. अच्छा जी, चले. दूसरा, बेनिफिसेंस, हमारे प्रोसीजर्स का मरीज को फायदा होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए. ऐसे ना हो कि आप प्रोसीजर करें लेकिन, और मेनी अ टाइम्स यू ऑल नो व्हेन यू डू कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स यू डोंट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो ये आपको मरीज को एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि डिजायर्ड रिजल्ट आए और मरीज का उसमें लॉस ना हो. ऑटोनॉमी, आपको चाहिए कि मरीज को सारे ऑप्शंस बता दें, एक्सप्लेन कर दें, और चॉइस पेशेंट को दें कि वो क्या प्रोसीजर्स करवाना चाह रहा है या करवाना चाह रही है. उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिटन होनी चाहिए, उसको सारे फायदे और नुकसान बताएं, अवेलेबल अल्टरनेट्स बताएं, रिटन कंसेंट लें. कॉन्फिडेंशियलिटी, आइडेंटिटी, इश्यूज, ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. और अगर डिस्क्लोज करना भी है, जरूरी है, तो ओनली विद पेशेंट्स कंसेंट इफ नीडेड टू द कंसर्न्ड पर्संस, उसके बगैर नहीं. ट्रुथ टेलिंग, कोई फॉल्स क्लेम नहीं होने चाहिए. परमानेंट रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर, इज इट अ ट्रू क्लेम? नो, you should not make false claims. You should tell the patient truthfully that this may be, we can get permanent reduction of the unwanted hair, we cannot have permanent removal of the unwanted hair. कोई false claims नहीं होने चाहिए. और justice, choices, priorities justified होने चाहिए. अपना या फार्मास्यूटिकल कंपनी का बेनिफिट प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इज पेशेंट्स बेनिफिट. इस्लामिक प्रिंसिपल में भी देखें तो हमने देख लिया कि ये तकवा और ये हमने पहले कवर कर लिया. अकाउंटेबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज है. आप जो प्रोसीजर करेंगे यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. एक हदीस यहाँ मैंने लिखी है, ये हदीस की कई किताबों में आई है, मैंने यहाँ नसाई का हवाला दिया है कि जो कोई भी तिब की प्रैक्टिस करता है और उसको उसका इल्म नहीं था तो वो जिम्मेदार है. जो कोई नुकसान होगा ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल. उससे उसका जो भी उसका नतीजा है उसको फेस करना पड़ेगा, और ये हदीस में है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप वही प्रोसीजर्स करें विच यू आर गुड एट, विच यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ, विच यू हैव गॉट एक्सपर्टीज ऑफ.
टेक्निकली साउंड हैं आप, ऐसी कोई चीज ना करें जिसका आपको इल्म नहीं है या आप टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, जिससे मरीज को नुकसान हो सकता हो। अगर नुकसान होगा तो आप शरन रिस्पॉन्सिबल होंगे उसका नुकसान पूरा करने के लिए। इखलाक या रेस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने इंसान को, मैं अगेन मुसलमान नहीं कह रहा, इंसान कह रहा हूं, इस्लाम की तकरीम का बड़ा ख्याल रखा है। कुरान में सूरह बनी इसराइल में आया है, वालकद कर्रमना बनी आदम, हमने वी ऑनर्ड ह्यूमन बीइंग्स, हमने बनी आदम को बड़ा एजाज दिया है, उसको बड़ा इकराम किया है। इसी तरह लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तक़वीम, वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट कंपोजिशन। सो उसके रेस्पेक्ट, ऑनर और डिग्निटी का ख्याल रखना आपके किसी भी प्रोसीजर में बहुत जरूरी। एहसान और एक्सीलेंस, एहसान का एक मतलब तो है डू गुड, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, लोगों पर उस तरह, लोगों से इस तरह नेकी करो या इस तरह एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। लेकिन एहसान का एक मतलब है परफेक्शन, एक्सीलेंस। एक बड़ी मारूफ हदीस है, हदीस जिब्राइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे, एक आदमी आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने शुरू किए, ईमान क्या है, आपने वो एक्सप्लेन किया। फिर उसने पूछा इस्लाम क्या है, आपने वो एक्सप्लेन किया। फिर उसने पूछा एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम ये कैफियत पैदा नहीं कर सकते तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। तो परफेक्ट एहसान मीन परफेक्शन, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। यू मस्ट हैव प्रोफेशनल एक्सीलेंस। उसके लिए आपको अपना नॉलेज भी अपडेट करते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स भी अपडेट करती रहना चाहिए। एक और हदीस मैंने नीचे दी है, कई किताबों में आई है, मैंने बुखारी का रेफरेंस दिया है, ये इतना हिस्सा सब में कॉमन है, फिर आगे इसका कुछ हिस्सा मुख्तलिफ कुतुब में फर्क है। हदीस क्या है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका के इलाज नाजिल नहीं किया। अब इसकी एक रवायत वो अलबानी ने अपने वो जो सिलसिला हदीस सहीहा है उसमें जिक्र किया है, उसमें इसके आगे जिक्र है कि जिसने जानना चाहा, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज नाजिल नहीं किया, जिसने जानना चाहा उसे बता दिया, और जिसने ना जानना चाहा उसे लाइल्म रहने दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च या कम से कम नॉलेज अपडेट करना, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स जरूर अपडेट करें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के हवाले से भी, ताकि आप मरीज को रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आपका प्रोसीजर जो है अच्छे रिजल्ट्स उसको जो है आप दे सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुदूदुल्लाह और लिमिट सेट इन इस्लाम। एक मैंने आपके सामने पहले हदीस रखी, अल्लाह इज ग्रेसफुल एंड लव्स ग्रेस। कुरान में लिबास के दो मकासद बयान हुए हैं, टू पर्पसेस ऑफ क्लोथिंग आर टू कवर द बॉडी एंड टू ब्यूटिफाई द अपीयरेंस, ये कुरान में बयान हुआ है। मैंने आपको आयत का रेफरेंस भी दिया हुआ है, अल आराफ की आया नंबर 26। अब क्या चीजें, मैं इंडिविजुअल प्रोसीजर्स की बात नहीं करूंगा, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात करूंगा। Men imitating women और vice versa are not liked in Islam। कई हदीस हैं इसके बारे में कि आदमी औरत की शक्ल शुबाहत इख्तियार करे या औरत आदमी की, it is disliked, it's not allowed। No extravagance और pride, वला तुसरफू, इसराफ ना करो। एक्स्ट्रा ये जो है ना एक्स्ट्रावेगेंस और फखर की तो मुजम्मत आई, कहा गया कि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर ना करो। Changing the original or natural state, that is creation of Allah, is against the teaching of Islam। जो नेचुरल स्टेट है, तो अब आप कहेंगे कि फिर हेयर कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, तो आगे इसके आ रहा है कॉस्मेटिक और सर्जिकल प्रोसीजर्स टू रिमूव some kind of disfigurement that cause some kind of physical, psychological or emotional trauma are allowed। ये तबरी की हदीस मैंने मुख्तसर से नीचे जिक्र किया, रिमूव व्हाट इज हार्मफुल फ्रॉम योरसेल्फ व्हेनेवर पॉसिबल। इसकी बैकग्राउंड ये है कि अबू इसहाक नामी एक शख्स की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और उसने ये पूछा सवाल कि मेरे ये माथे पे बाल हैं या चेहरे पे बाल हैं, तो क्या मैं अपने शौहर की खातिर इनको रिमूव कर सकती हूँ? तो हजरत आयशा ने कहा तकलीफ को दूर करो। तो इट्स क्लियर कि जो चीज हार्मफुल है, तकलीफ दे है, उसको दूर करना। इसमें एक और भी, नेचुरली हमने रिस्टोर करनी है नेचुरल चीज को। अगर हम नेचर के अगेंस्ट करेंगे तो दैट इज फिडलिंग विद क्रिएशन ऑफ अल्लाह। नेचुरली वुमेन डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर फेस, सो इफ दे हैव हेयर इट इज समथिंग एबनॉर्मल व्हिच नीड्स टू बी ट्रीटेड, व्हिच नीड्स टू बी क्योर्ड। आदमियों में ये सूरत हाल नहीं है, men naturally have hair on their face, तो men में facial hair को remove करना is against the creation of Allah, against this principle, whereas
इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फीमेल। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ कई जगह पे आता है, मैं आगे आपको एक प्लकिंग और एपिलेशन ऑफ आईब्रोज इज नॉट अलाउड, ये वाजे हदीस में आया है, इसके लिए नम्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसका बहुत सारे लोगों ने तर्जमा आईब्रोज के बालों को प्लक करना या एपिलेट करना है। कुछ लोग इसमें कटिंग भी शामिल कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज प्लकिंग और एपिलेशन, इट इज नॉट कटिंग। कुछ लोग सिर्फ आईब्रोज की बजाय इसे पूरे फेस पे ले जाते हैं कि जी पूरे चेहरे से नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा बाज मुफस्सिरीन ने ये स्ट्रिक्ट व्यू इख्तियार किया है, बाज उलमा ने, लेकिन ज्यादा की राय इंक्लूडिंग अबू दाऊद यही है कि नम्स सिर्फ आईब्रोज के बाल हैं, ये सारे चेहरे पे या बाकी जिस्म के बालों पे इसका इतलाक नहीं होता। तो आईब्रोज के बाल प्लक करना, आई एम नॉट सेइंग कटिंग, स्ट्रिक्ट मीनिंग इसके यही है, बाकी इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर पाया जाता है। ये मैंने पहले आपसे बता दिया कि ये रिमूवल ऑफ फेशियल इन फीमेल इज, टैटूइंग इज नॉट अलाउड, क्लियर कट मेंशन्ड है हदीस में, टैटूइंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। हेयर ट्रांसप्लांट ऑटोग्राफ इज परमिटेड, हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें आप अपने बाल पीछे से लेके सामने लगा रहे हैं, इसकी बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन नेचुरल बालों को फॉल्स हेयर के साथ मिलाना, इसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशंस हैं। इसके बारे में मैंने इंडिविजुअली डिटेल्स में, मैंने किसी, अगर कोई इंडिविजुअल प्रोसीजर आप बात करना चाहें तो यू कैन आस्क सम स्कॉलर्स, देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आई हैव जस्ट टॉक अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स। इनको मैंने 2 किताबें आपके सामने ये रखी हैं जिनसे मैंने हेल्प ली ये प्रेजेंटेशन बनाने में। ये एक किताब है अल हलाल वल हराम फिल इस्लाम, अल्लामा यूसुफ अल करजावी की। यूसुफ अल करजावी इज अ वेरी फेमस स्कॉलर एंड वेरी रिस्पेक्टेड, ही रिसेंटली पास्ड अवे लास्ट मंथ, ओरिजिनली इजिप्शियन बेस्ड इन कतर। इनकी बहुत सी किताबें मशहूर हैं, फिका उस ज़कात बड़ी मास्टरपीस किताब है, और भी बहुत सी किताबें। दिस इज अ वेरी गुड, ये हलाल और हराम के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है। इसके उर्दू और अंग्रेजी तराजिम पाकिस्तान में मिल जाते हैं, अगर आप इसको ले सकें तो जरूर। मेडिकल एथिक्स के हवाले से मैं 2-4 नाम आप मुसलमान डॉक्टर्स में कुछ फेमस, एक नाम है प्रोफेसर मालिक अल बदरी, ही पास्ड अवे कपल ऑफ इयर्स बैक, ही वाज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन सूडान, उन्होंने काफी काम किया जो पब्लिश हुआ है। दूसरा नाम जो इस्लामिक बेसिस ऑफ मेडिकल एथिक्स पे जिनका काम पब्लिश हुआ है, ही इज प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन, he was ex principal of King Edward Medical College, ex president of CPSP, he is still alive, Allah Taala उनकी उम्र में बरकत डाले, he is more than 90 years old now, right, still perhaps very, he used to be very active and still उनका काम इस्लामिक बेसिस ऑफ मेडिकल एथिक्स पे पब्लिश हुआ है। आजकल एक नाम है प्रोफेसर उमर कसौली, he is professor of ethics and professionalism in a university in kingdom of Saudi Arabia, बहुत बड़ा नाम है और बहुत उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान के अंदर Professor Muhammad Iqbal Khan is a surgeon and at the moment he is vice chancellor of Shifa Tamir Millat University Islamabad. He has done lots of work on Islamic basis of medical ethics और उनकी ये किताब पब्लिश हुई है Medical Ethics and Islamic Perspective, Dr. Muhammad Iqbal Khan, very good book। Islamic medical ethics के most aspects को उन्होंने इस बुक में कवर कर दिया है। आई हैव गॉट कपल ऑफ कॉपीज, मेरा ख्याल था कि मैं आज एक प्रोफेसर तंजीला के लिए लेके आऊंगा, आते वक्त मैं भूल गया, आई विल डिलीवर इट एट सम टाइम और द अदर, इट्स अ वेरी गुड बुक। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने भी ये पब्लिश किए हैं एथिक्स फॉर एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स। एस्थेटिक प्रैक्टिशनर must exercise strict patient selection criteria to determine whether a patient recognizes the long-term process and effect of the procedure and undertake a psychological analysis where required if concerned about the patient's motivation. Aesthetic practitioner must communicate to the patient about the risks involved, the possible side effects, and obtain valid consent from the patient directly if an adult. Aesthetic practitioners must observe all aspects of code of professional conduct. Aesthetic practitioner must undertake procedures in a properly equipped healthcare facility. Aesthetic practitioners must immediately refer a patient to a specialist in the event of complication arising out of a procedure which is beyond the training and credentialing of the aesthetic practice. तो ये सारे आप देखें तो ये सारे जो स्टैंडर्ड मेडिकल एथिक्स के प्रिंसिपल हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, ये उन्हीं की बुनियाद पर बनाए गए हैं एंड दीज हैव बीन पब्लिश्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन।
To summarize, cosmetology has become an essential part of dermatology practice. Medical ethics is a set of moral principles, beliefs, and values that guide in making choices about medical care. The standard principles of medical ethics are non-maleficence, beneficence, autonomy, justice. Islamically, the source of guidance in all fields is the divine revelation, Quran and Sunnah. Islamic principles of medical ethics, taqwa, ye sare humne kar liye, uphold the standard medical ethics with some additional features. Pakistan Medical Commission has also formulated ethics of aesthetic practitioners. The cosmetology practice needs to be governed by these principles. दो चीजें मैं मिस कर गया जो मुझे बाद में ख्याल आया, I should have added use of halal ingredients, लेकिन एक और इसके अलावा है observe the Islamic principles of gender interaction. It's very important. Ideally, अगर किसी female पे aesthetic procedures करने हैं, should be done by a female doctor or female cosmetologist. और अगर किसी मेल ने करने हैं तो, और या किसी फीमेल ने किसी मेल पे करने हैं तो अ फीमेल अटेंडेंट मस्ट बी प्रेजेंट और उसकी मौजूदगी में होने चाहिए. आई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. जज़ाकल्लाह खैर. अगर कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने. So we are really thankful for the time and the effort you took to share your thoughts and experiences. Our chair of this session, Professor Dr. Arif Maan, former head of Department of Dermatology at the Faisalabad Medical University. He is well known for his humble personality, exceptional rapport with patients, and never-ending willingness to share his vast knowledge of dermatology. We warmly welcome you, sir. Thank you so much for coming. I'm really very privileged to have the pleasant task of welcoming the distinguished personality, Brigadier retired Rehanuddin. He is currently working as the head of Department of Dermatology at CMH Lahore. He has the honor of taking the initiative of organizing the first National Institute Dermatology course. He has a master's degree in education from CPSP in 2012. He conducted more than 100 workshops on different aspects of medical education. His talk is titled as Difference Between Appearance and Disease. Sir, please start your session. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. I have sent you the link of my Zoom link. Can you share it with others? Because it's not possible for me to talk from my telephone. I have to share my screen with you. So I have sent you my own link. And I have sent you the Google form as well for sharing with your participants. Is it possible? Yes, should sir. I talk on? We will present it. I already sent it. Please check it on your WhatsApp. The Zoom link of today's class, you can show it to everyone and you can send it. Or you just click my Zoom link, which I have sent to you, then I'll be connected with you all on your WhatsApp. जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर तंजीला है। जी तंजीला, आपको मैंने भेजा था ना लिंक अपना जो टू क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग इज के सब पार्टिसिपेंट्स अपने अपने व्हाट्सएप अपने अपने फोन से आपके साथ लिंक हो जाए। बिल्कुल सबसे बेहतरीन वो है कि सर माय अपॉलॉजीज फॉर दैट बिकॉज़ अच्छा इस वक्त वी आर सिटिंग इन द ऑडिटोरियम एंड वी हैव लाइक अराउंड 200 पीपल। ओके, तो व्हाट वी कैन डू बिकॉज़ how can I show you my slides on this? नहीं, आप अपने लैपटॉप से नहीं लिंक हुए हुए? मैं अपने लैपटॉप से लिंक होता हूँ, फिर ये करूँ और फिर आप शेयर मेरा कीजिए, ठीक है? ओके, दैट वुड बी द बेटर वे। अगर इसमें कुछ टाइम है, सो इन द मीन टाइम वी कैन हैव अनदर टॉक। चलें, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। लेट्स बी कनेक्टेड। मैं कॉल इसीलिए कर रहा था कि ताकि आपसे मेरा ये थोड़ा सा हो जाएगा कि हम एटलीस्ट कनेक्ट हो जाए। तो लेट्स अदर पीपल।
So I हाँ think वो in the मैं कॉल कर meantime, रहा था दोनों with the को। हाँ permission जी of the मीन टाइम chair, आप दूसरे को बुला लीजिए। ठीक है ओके सर, तो हम थैंक 10 से 15 मिनट बाद आपको दोबारा कनेक्ट यू। करेंगे। ये थैंक यू लेकिन सो मेरा मच। व्हाट्सएप पे जरा लेट्स बी कनेक्टेड, क्योंकि आप दोनों का फोन रिप्लाई नहीं कर रहा था, आपका भी है। हमारी सब बैटरीज डेड है, वो चार्जिंग पे है और हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, वी आर ऑन ऑटो, तो So you are enjoying that and thoroughly enjoying the conference. about the torture I was having कि यार no connection। तो ये आपके साथ साथ कनेक्ट होते हैं अभी, और इन द मीन टाइम हम अपने अगले स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू जी। Our next guest speaker is Dr. Suhail Jabbar. Sir, you have made all of us proud of your distinguished research work in the field of computational sciences. He is serving as a professor at the Department of Computer Science, Associate Dean, and Director of ORIC at the University of Faisalabad. He also worked at Manchester Metropolitan University, UK, as a research associate in 2020. He is involved in publishing over 100 research articles in prestigious journals and is involved in national as well as international projects. Moreover, Stanford University enlisted him among the top 2% of the scientists in the field of information and communication technology. It is my privilege to invite Dr. Suhail Jabbar to the stage. Sir, I request you to please come and enlighten us with your knowledge regarding beauty and its boundaries in Islam. Recording stuff. Please turn the light off. For camera, कैमरे के लिए ठीक है लाइट ऑफ करना या ऑन कर लें? ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. This is fine with me. Dear audience, Allah subhanahu wa ta'ala is the Khaliq, Malik, and Razik of all this universe. He is the only one who created, who is the creator, the sustainer, and the planner of whole this universe. He created the human in its best form and shape. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And what Allah subhanahu wa ta'ala has given the status to this human, his Khalifa in this universe. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. And the fact is, the human is the groom and bridal of this universe. And you know the status of the groom and bridal? Every decoration, every beauty, and all the food, and all the decoration in the ceremony is only due to the bridal and the groom. No bridal, no groom, no decoration, no beauty, no ceremony. And what's the status
And what's the personality of this groom and bridal? وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Here the word ahsan is used. That word is again used in لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And the demanding amal from this ahsan taqweem, from this ahsan taqliq, is also ahsan. What's the meaning of ahsan? This is a superlative degree, just like good, better, and best. Similarly, ahsan, Hasan, Hussain, ahsan is a superlative degree. And each and every person, every human in this universe is ahsan, irrespective of any color and any venue, any space, any area. Allah subhanahu wa ta'ala created the human in a way that he wants us to love as it is. Allah subhanahu wa ta'ala created the human in a way that he wants us to love yourself, to be proud of what he is, and to be dignified what he is. And this creation what's the reason behind it? Again, created the human and the bridal and groom and sawwarakum ahsanu sawarakum, and beautiful. And Allah wants from us to love yourself. Who am I? Be confident. Who am I? Be dignified. Who am I? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be of him only. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be of him only. How? He wants us. Whatever you do, just only do for me. This is ikhlasus. Some Sahabi asked from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, what is iman? What Nabi sallallahu alaihi wasallam replied? Ikhlas. And what is ikhlas? Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No beauty except for him. No ibadat except for him. No sacrifice except for him. No life plan except for him. No death plan except for him. No marriage plan except for him. No family plans except for him. No earning plans except for him. No expenditure plans except for him. No love plans except for him. What is this? No, 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 no. This is La ilaha. And except for him, and all these things, illallah. La ilaha illallah. And how to do all these things in our life so that whatever we do, it all is acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala and rewarded us gracefully in this mortal world and immortal hereafter. And how to do that? Muhammadur Rasulullah. Only with the way Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam did it, the sunnah. What is muasharat? This is sunnah. Without sunnah, no muasharat for Muslims. If in muasharat there is no sunnah, this is a muasharat for non-Muslim society. If you want to say any muasharat, the Islamic society, there must be sunnah within it. Because we have forgotten this concept. We have lost this idea. That's why we have designed our own definitions in each and every domain of life. And that's why we all are distracted. And same is the case with the definition of beauty. The definition of beauty is also distorted. And in implementation of that
distorted definition of beauty, we have entrusted ourselves to others. This is a very important point to understand. Because of this distorted definition, our self-created distorted definition of beauty, we have entrusted ourselves to others. We have given our control to another's hands. And we have dragged ourselves in under pressure to look like what the other wants from us. And actually, we have enslaved us. And actually, maybe this is a new concept, but this is a real and actual and real and true concept. But actually, we have enslaved ourselves. And what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us? Only for Him, not for any others, not for any other. He wants us to be free from all types of shackles. He wants us to be liberated. And we have entrusted us, spurd karna. We have entrusted us to the society, to the family, to the media, to the norms. And it's not bad and wrong to say, we have entrusted us over to Shaitan. Whatever the plan he wants to make us, he just implemented through our environment, and we follow it, and we make ourselves as they want from us to be like, look like. Subhanallah. The people are so under pressure from all these external forces and factors that sometimes they become so much embarrassed of what they are. And in some cases, or in extreme cases, they actually hate themselves, what they are. And this condition really is very challenging for them. And what do they do to overcome this situation? They paint their faces. They make tattoos. They paint their faces. They make tattoos. They uplifting their faces. They do cosmetical surgeries. And all these things. Just for what? Because they are following the distorted definition of beauty. Sometimes what happens? People think, if you are under pressure to paint your face or to modify your look, to alter your look in a way that other wants you to be like that, in a way that you consider yourself to be okay in your circle. Actually, that circle is defining your pace. It's not an enslavement. It's not an enslavement. So, what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you to be come out of the shackles. In bediyon se bahir aao. Only for me. Your everything is for me. A lot of other things are there.
Okay, if these are all the boundaries, not do that, it means that no makeup, not anything. No, 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 no. Wallahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है. What were the limitations? I consulted with some ulama and concluded with 4 points. Sorry, with all my sisters and daughters. I come up with 4 points. Number 1, makeup allowed. Makeup in front of mahram and women is okay. Makeup in front of women and mahram is okay, other than haram. Makeup that should not harm your face or any part of your body is okay. The makeup should not contain, the makeup item should not contain any haram or najas item. And the 4th one, makeup should not be permanent. It should be temporary. Like tattoos, painting your face in a way that is permanent, like uplifting your face, your cosmetical surgery, only for the purpose of beautification. Yes, okay, if there is health benefit, just like lots of shares. Only for the purpose of health benefits and not for beautification. Subhanallah. Parda, abaya, hijab, niqab, all these similar things. The more you exposed your body, the more you exposed your body to the people, the longer the list of the requirements for your face, for your look to be fulfilled. Keep it in your mind. The more your body is exposed to the people, longer the list of the requirements for your look there will be to be fulfilled. Maybe this is one of the main logic behind covering yourself. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. This is for the spouse. قل لأزواجك يا أيها النبي قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن. Here is the complete definition how you should cover yourself. Another important point, just like Dr. Saab shared. Only covering yourself is not the Islamic dress code. But the fact is, covering and protecting is an Islamic dress code. Suppose someone is covered from head to toe with a skin-tight dress. Someone is covered with head to toe with skin-tight dress. Once again, let me repeat. Someone covered himself from head to toe with skin-tight dress to let the other people's, to drawing the attention of the people to different parts of the body. And we are just thinking we are dressed Islamically.
In fact, this is not dressed Islamically. This is just this, the person is actually cheating himself, just deceiving himself with the lame excuse that I am dressed Islamically. I am beautified with Islamic dress. This dress, this libas, this attire is the dignity of the human. And Shaitan knows losing the dress, shortening the clothes is actually losing the dignity of the human. Subhanallah. And we are living in a time where losing the dress, where shortening the clothes is celebrating. Let's conclude in a soft and polite way. This beauty, this appearance is the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. And with every ni'mat, there must be shukr, thankfulness. And with every ni'mat, there must be shukr, there must be thankful. La in shakartum la azidannakum. And what's the shukr? What's the thankfulness? Utilize that ni'mat, utilize that blessing in a way that the grantor wants to do. Utilizing that ni'mat, spending that ni'mat in a way that Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, and guided you through his last prophet, Khatamun Nabiyyin Muhammadur Rasulullah. Let me share an authentic and trusted and reliable tip of increasing the ni'mat in its quality and quantity. Let me share with you an authentic and reliable tip for increasing the ni'mat in its quality and quantity. Everything you have is the ni'mat, from head to toe, from your family, from your siblings, from your spouse, from your kids, and anything you have around you. Let me share a tip. By following it, you can increase that ni'mat in its quality and quantity. You know what's that? Use that ni'mat as Allah wants from you. And la in shakartum la azidannakum. If you do shukr of me, I will increase you in your ni'mat in its quality and quantity. And with every ni'mat, just 5 minutes more. And in every ni'mat, yes, less than 5 minutes. Okay. Okay. So with every ni'mat, there is associated a trial. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. So how to come up with this trial? Just do shukr and the trial will be finished. And you will be promoted to the next stage. Remember, Allah subhanahu wa ta'ala loves you and wants you to be only of him. Man kana lillahi, kana Allahu lahu. Who is to Allah? Allah is to him. Just remember out of this talk 2 statements. Number 1, Allah wants from you only to be of him. The second, man kana lillahi, kana Allahu lahu. Who is to Allah? Allah is to him. Thank you. Thank you so much, sir, for an impressive talk. Your talk has really enlightened our hearts with great knowledge.
Brigadier retired Hanuddin has rejoined us again, and now we will be having a session about difference between appearance and disease. Sir, I can't hear you. Please turn on your mic. जी मुझे अनम्यूट कर दें और मुझे शेयर स्क्रीन अलाउ कर दीजिए. ओके, थैंक यू. Sir, please start your session. Am I audible? Yes, sir. My screen is visible to you? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you very much. Can you show me the audience? Can you look camera towards them so that I can interact with them? Yes. Now I can see the audience. Thank you very much. Welcome on behalf of CMH Lahore Medical College. I represent CMH Lahore Medical College as Professor of Dermatology. सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि मेरी वजह से भी थोड़ी देर हुई, लेकिन 2 बजे का सेशन अब मेरे पास, हम 3 बजे शुरू कर रहे हैं. मुझे तरस आ रहा है, कभी आपने खाना अभी तक नहीं खाया. तो वी वुड लाइक टू रिड्यूस आवर सेशन टू मिनिमम टाइम. पहले मैंने सोचा था कि जूम मीटिंग आपको से खुद मिलवाऊं, लेकिन वो पॉसिबल शायद नहीं हुआ. मैं ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कि सामने आपको ये लिंक नजर आ रहा है. अगर आप इस QR कोड से, ये क्वेश्चनर है, सिर्फ 5 सवाल हैं छोटे छोटे से, उनका जवाब आप काइंडली दे दें तो इट विल बिकम एन इंटरैक्टिव सेशन, बिकॉज देन वी विल प्रोसीड according to your responses, the questions which I have asked. So what you can do is just see with the QR code, और ये अपने मोबाइल से आप इस QR कोड की तरफ करेंगे तो आपके पास एक सवालनामा गूगल फॉर्म खुल जाएगा और उससे आप जवाब दे सकते हैं. 1 मिनट के अंदर जवाब देंगे. Then we will proceed. वरना ये अगर मेरी तरफ से, जूम की तरफ से होता था, मैं इसी जगह से पोल ले लेता और वो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते. So I am giving you only 1 minute if it is possible. Whatever responses, then we will proceed. तंजीला, आपका खुल गया ये एक फॉर्म? Can you give me the feedback about it? Dr. Tanzila, are you here? जी सर, मैं आई हाँ, एम हियर एंड लेट मी चेक. सर यहाँ थोड़ा सा नेट का भी इशू है हमारे यहाँ पे. देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स. तो अच्छा, कुछ जवाब तो मुझे आए हुए हैं वैसे. उनसे चले पहले लेट अस प्रोसीड. ओके, may I have your attention please? Today's theme is power of looks, cosmetic industry and unrealistic beauty standards. और मुझे कहा गया कि difference between appearance disease. Actually I wanted to talk about what is the difference between dermatology and cosmetology practice. So let me show you a few things about the appearance. You can recognize him. He's Tom Cruise in 1986, and the same gentleman, the same posture after 30 years in, or rather 36 years in this latest film of Top Gun 2. So this man's appearance has changed very little, even after a gap of 36 years. Now, his facial appearance has also not changed. It doesn't look like a man above 60. But you can see the lady who is accompanying him in 86, what is she looking in 2022? So that is the perspective of appearance which changes with age, and aging is the thing which is responsible for our appearance. So I have asked this question particularly in this Google form from you, and what is your guess about the age of this lady? Let me see what is your response, and we can see it just now.
ये what is your, can you see my screen? Is it visible to you? Screen नजर आ रही है मेरी? Hello? Hello? Yes, sir. We can Yes. see. We can see your. ये what is your guess about her age? Can you see? तो 50% कहते हैं 30 to 40 इसकी उम्र है, 40% कहते हैं 41 to 50 है, और 51 to 60 तकरीबन 18%. अब 11 रेस्पॉन्सेज आ गए सर हमारे एक स्पीकर कह रहे हैं 70 years. हैं, स्पीकर कह रहे 70. अच्छा, जिन्होंने एंटी मजेदार एजिंग बात ये एक वो पेटेंट भी बनाया हुआ है. you cannot guess correctly because her age is actually 79 years old. She is 79 years. So appearance, since depends on the aging, we have to look and we have to understand the aging process and the basic knowledge of few diseases. Appearance depends on our color, hairs, nail, texture of the skin, oil on the skin, nails. All these things, they determine our appearance, which are visible to other people. अच्छा, ये जो है skin, it keeps on growing, keeps on shedding, and hairs, we are provided with a specific number of hairs. And they are, the follicle number on every human being is about 5 million, and the numbers are same. It doesn't matter whether a chimpanzee or human being, number of hair follicles are same. It is the texture of hair which determines कि ये जो है कैसे नजर आएंगे, and they miniaturize with the passage of age. Then we have melanocytes, which determine our color. These melanocytes, they inject melanin in our skin, and the amount of melanin depicts the color of the skin in combination with hemoglobin and keratin. All these things, they intermix and produce our color. It is not the only melanin. So it gives us different shades, and number of melanocytes are equal in everybody. It is the amount of melanin which determines our color. So this is the skin which we see under the microscope, but we have to see that epidermis consists of only cells, but dermis, we have cells, fibers, matrix, vessels, and nerves. In fibers, we have collagens and elastic fibers. In matrix, we have lactic acid, hyaluronic acid, glycans, mucopolysaccharides, so and so forth. And then we have glands and hair follicle. Now, these are the things which determine our skin texture and appearance. What happens with the passage of age? In aging, everything declines. Every function, every part declines, cells, they reduced, hairs are miniaturized, melanocytes are reduced, and you must have seen your grandparents' color is usually much lighter as compared to their previous one. They lose their hair, and the dermis, all the components of the dermis, they are reduced, and as a result, what happens? And the gland secretions, they are also reduced. What happens then afterwards? कि यहाँ पे ये होता है, the epidermis part is miniaturized, it is thinned out, and this is the thinning of the epidermis, which you can see over here. And what happens once this is thinned out? The surface area of transfusion of nutrients, that is also reduced, and everything becomes reduced in the number as well as its quality, its quantity. And your skin appears like this in the old age. So, ये flattening of dermo-epidermal junction की वजह से सबसे बड़ा मसला होता है कि आपकी जो nutrients हैं वो skin पे खत्म हो जाते हैं. So that is, you must have, I don't know how many of you have seen a movie, name is In Time, and I want to show you a clip of it.
Because in this movie, they showed that your age stops at certain age. Let me show you. I don't have time. I don't have time to worry about how it happened. It is what it is. We're genetically engineered to stop aging at 25. The trouble is, we live only one more year. Unless we can get more time. Time is now the currency. We earn it and spend it. The rich can live forever. And the rest of us? I just want to wake up with more time on my hand than hours in the day. Bella's daughter is always asking about Lady you. is her mother. For a Both girlfriend. ages have Besides, stopped it's at her. the age of 25. What do you got? And they have to buy 3 days, everything not with even. time. You'll That have is that the in red. concept of this. Now, with this little bit time to understand the process of aging, let's come to the facial diseases which are actually determining our appearance. For example, which damage looks like dermatitis, acne, hair problem, pigmentation problem. This is the dermatitis. And once it heals, the lady is definitely thankful. Similarly, these ladies who are suffering from very severe, almost burn-like reactions of the skin diseases, their appearance, they are not only grateful for them, but their whole family. Similarly, severe acne, it is after healing when she is accepted and she is thankful that her condition has improved a lot. Chaya or pigmentation on the skin, once improvement occurs, they are thankful. Similarly, loss of pigmentation, that is vitiligo, once it is improved, it's a good idea. Hairs, if hairs are lost and they regrow, they again restore our appearance. Similarly, in this case and in this case. But in a lady, if hair grow at the normal place, then it becomes a problem. In male, it's a hair loss, hair growth on the face. And again, we need treatment. So we have to improve the appearance of face if they suffer from diseases. We can't go into the detail of those diseases. There's a list of thousands of diseases. So here again, I would like to see your second question. That is yes. Okay, what about her age? What is your preference to be addressed as? You said beautician only 8.3%, cosmetician 41%, makeup artist 8.3%. You want to be called cosmeticians and beauticians, majority of you. And then here, let me see it again. What is your concept about class 1 evidence? No idea, 75%, so we should not discuss it again here. What is your concept about pseudoscience? No idea, and forgotten is there. So because we are going to use these information in our further discussion. Okay. So cosmetologist is actually a person who do hairstyle and makeup. He used to deal with the skin and scalp. And person who loves a lot of makeup and they keep on buying makeups, we call them cosmoholic. And let us see a cosmoholic. You have already seen a lady. Look at this.
So this way, an ordinary girl, looking girl becomes a very extraordinary model. So cosmetic industry, what does it do? It believes and it produces lotions, creams, shampoos, moisturizers. And I would like to ask you why they have changed the name of Fair and Lovely to Glow and Lovely. Any of the participants? Why they have changed? They used to call it Fair and Lovely. Now they've changed to Glow and Lovely. You can see their advertisement everywhere. We have changed it. What could be the reason? Anyone? Any volunteer? No? Sir, because of racism? Yes, Racism? yes. The color is a God-gifted thing. We should not discuss it. There is not one color which should be preferable to other. So they have erased this word. They have changed it to glow. Fair is not required. So we have to accept our color, whatever we are born with. We should not be worried about to improve it. It is the number of melanocytes in our normal body. What to say? It's a background. It's a constitution. It is there in your genes. So why you should be ashamed of it? And then there is one thing you have said. Very few people said they don't. Pseudoscience. What is the pseudoscience? All these cosmetic industry, whatever they say, actually it is a pseudoscience, because actual science is that whatever you do, you take random people, 100, you divide them in two groups, both diseases, as Dr. Saab has told us about the ethical study, about the Tuskegee study. They just observe. They have to make them in groups, two groups randomized, both suffering from the same problem. They and their doctor should not know what drug or they are taking. It could be anything. One group should be taking drug and the other should be taking any placebo, and it should be an organized trial, and then they should record. And this is class 1 evidence. But the problem is no cosmetic industry, I repeat, they don't have any class 1 evidence trial in their credit to claim that this thing has done this or that is improving. There are few anecdotal cases. एक ये बंदा आ जाता है टीवी के ऊपर, वो अपने बता देता है, उस पर सब यकीन कर लेते हैं, हाँ जी इसे इंजेक्शन से मैं गोरा हो जाता। Everybody भेड़ चाल लग जाती है उसके लिए। So the results are always retrievable in scientific studies at different settings. So we cannot stop aging process, but we may improve appearance, as Dr. Saab has already told you. There's the whole system. These are the faces, ordinary faces, which you today see on the media. They are normal people. They just improve just because of their makeups. So it depends what happened, that our self-perception determines our self-esteem because of the relation of our skin and our nervous system. Both nervous system and skin are derived from ectoderm. So appearance affect nervous system and nervous system affect appearance. Now this lady having just one pimple, so worried. It is just affecting her self-esteem, one pimple. And this man, he has got so much high self-esteem that he is not at all worried about his appearance. So all these things, I'm just going through this diet, exercise, hormones, antioxidant, vitamins, all these things, they improve your appearance. But I want to conclude by saying that all these gadgets like laser and things, more machinery, they are actually meant for patients. And as a side effect, people of cosmetic, those who want to get cosmetic improvement, they should get treatment, but with
heavy charges, because these people, they cannot afford, these people who are suffering because of the disease, which are affecting their self-esteem. These people are neglected. And I want to conclude by saying that in our country, what is required? There is no skin institute. There is no dermatopathologist. There is no mycologist. Instead of diverting our attention towards cosmetic and things like that, we should focus on dermatology more. And as a side effect, we can have this cosmetology practice and we can earn, but our focus should remain on dermatology, particularly building institutes, getting good equipment to treat all these patients who are suffering from their appearance. Thank you very much. Any question? I am here. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. The lecture was really informative and extremely helpful for the students. We are so honored to have you among us. Thank you. Now I request the chair of the session, Professor Dr. Arif Maan, to please come and present the shield to the presenters. I request Professor Dr. Tanzila Khalid to join him, please, ma'am. Dr. Salim Gauri, you are requested to please come on stage and receive your shield. Dr. Suhail Jabbar, please come on stage and receive the award from our respected chair of the session. Now I request Dr. Tanzila Khalid to present the shield to Professor Dr. Arif Maan. Now it's the time for the panel discussion, and the stage is over to you, Dr. Tasmia. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Tasmia Afzal, FCPS Resident Dermatology Department, Medina Teaching Hospital, Faisalabad. Before starting the discussion, I would like to make a few announcements. First of all, please turn your phone on the silent mode so that there is no interruption. Secondly, if you have any questions from our worthy panelists, please note them down. Third, it's going to be a bilingual discussion because it's for the general awareness among the society as well. I would like to invite my worthy panelists. First of all, Professor Dr. Arif Maan, sir, please come on the stage. Obviously, sir doesn't need any introduction, but the one line that defines him, he is the professor of professors. And by that, I mean almost all the professors working in different institutes are his students. So thank you so much, sir, for coming and joining us. Next, our panelist is Dr. Iram. She's working as psychiatrist. She is associate professor in Department of Psychiatry, DHQ Hospital, Faisalabad. Thank you so much, ma'am, for coming. Third, our panelist is Dr. Shaukat Parvez. Sir, please come on the stage and join us for this panel discussion. As you have seen it before, he has, mashallah, 8 patent products and more than 85 publications.
So we would like to know your knowledge too. And then my very dear supervisor, Professor Dr. Tanzila Khalid. She is working as a dermatologist as well as medical educationist in Department of Dermatology, Medina Teaching Hospital, Faisalabad for the last 30 years. Thank you so much, all of you, for joining me. So why we are here and what we are going to discuss. Just like any other variable, we always classify something. To classify society, we have an acceptable criteria based on the socioeconomic status, that is the upper class, middle class, and the lower class. But don't you think another variable persists, and that is a classification on the basis of physical appearance? Who do we call beautiful? Any tall, thin, young person who has no disability, that is beautiful? Okay. But what about the others? Aren't they beautiful? Have we ever thought, what do they feel? What do they face in the society? To discuss this point, we have our worthy panelists to discuss a very important but neglected topic. What is the power of looks? To start this discussion, I have an important question from all my worthy panelists. What is your standard of beauty? I would like to know all of your opinion. What is the standard of beauty? Who should we call beautiful? Starting from Professor Dr. Arifman, please. Thank you, madam. My perspective of beauty is that one who is acceptable to his family, to his spouse, that is beautiful, what they want, and what is the interactive relationship of them. Okay, sir. अब मैं अपनी जाती मिसाल देता हूँ कि मेरा बेटा है, 2020 में शादी हुई उसकी, तो मिसेस ने वैसे ही कह दिया उसके मेरे बेटे को कि तुम्हारे बाबा आजकल परेशान है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता मैंने कौन सा मॉडल करनी है, बस पढ़ने वाली हो, मेरे साथ चलने वाली हो। तो वो हो गई, शुक्र अल्लाह का। Okay, next, Dr. Adam, please. जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तंजीला की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया, बिकॉज डर्मेटोलॉजी और साइकाइट्री का मैं समझती हूँ बड़ा करीबी ताल्लुक है। चीज़ें जो आपकी स्किन से रिलेटेड हैं वो आपकी डायरेक्टली सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। खैर लेटर इस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगी। अभी जो आपका क्वेश्चन है कि ब्यूटी, नो डाउट जैसे कि हम जानते हैं, बहुत से आज जो एथिकल कंसिडरेशन भी हुई, इस्लाम का हवाला हुआ, मेरे ख्याल से दिल की खूबसूरती से बढ़ के जो है कोई खूबसूरती नहीं होती। अगर आप सिंसियर हैं, लॉयल हैं और अपने सेल्फ के साथ भी और अगले पर्सन के साथ भी, तो आपके चेहरे पे ग्लो खुद ही आ जाता है। वेरी वेल सेड मैडम। डॉक्टर शौकत परवेज, सर, योर टर्न। यही है, तो आई थिंक मैं तो सेकंड करूंगा मैडम आपका नाम है। तो एक्चुअली ब्यूटी लुक्स ब्यूटी, यू नो, बट दैट रिफ्लेक्ट के बी व्हाट यू हैव इन योर हार्ट माइंड। तो जब आपकी अच्छी सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, जिस तरह उन्होंने कहा, आई 100% एग्री, दैट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। आई थिंक दैट इज आल्सो ब्यूटी। ओके मैडम, योर टर्न। जिसको मैं ऐड कर दूं कि नियत जिसको बोलते हैं, वो नियत सोच, इफ इट्स पॉजिटिव रियली इट्स अट्रैक्ट, यू विल बी अट्रैक्टिव, लुक अट्रैक्टिव। इफ आपके दिल में या किसी सोच में कुछ है नेगेटिविटी, वो दैट रिफ्लेक्ट, दैट हैज बीन इट्स it has been approved, I mean scientifically. It's not just get you positive thinking but reflect from your face, and you will look more beautiful, more pleasant and attractive. So that's my standard of beauty, is on your niyat, on your thinking, that reflect. Thank you very much. दूसरी मिसाल ये है मैडम कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम में से किसी को भी अपने पेरेंट्स के कलर के बारे में या उनकी अपीयरेंस के बारे में आम तौर पे इतनी परेशानी नहीं होती, हमें वो अच्छे लगते हैं। एजिंग फिनोमिना जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, तो मैं तो इस लफ्ज़ पे बिलीव ही नहीं करता कि एंटी एजिंग थेरापीज पे हम कोशिश करते हैं अपने के अपीयरेंस जो है वो आपके सेल्फ एस्टीम के लिए वो ज़रा बेहतर हो जाए। अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक एंटी एजिंग। ये तो रब का एक निज़ाम है जो उस अपनी चिप के मुताबिक जो हमारे जीनोम में है,
हम उस प्रोसेस में से गुजरते हैं। वो जो एक बहुत ही उम्र रसीदा खातून जो उन्होंने बहुत यंग दिखाई है, तो वो ऐसे ही है कि जो फोटो एजिंग वाला एलिमेंट निकल गया होगा, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री में रहते हैं। जैसे हमारी फोटो एजिंग है, इंट्रिंसिक एजिंग है, तो वहाँ पे फोटो एजिंग वाला एलिमेंट निकल गया होगा शायद। तो बाकी जी सर, ऑब्वियसली। बाकी जहाँ तक रहा ना ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, आई थिंक ये बहुत एक्सपर्ट से मुझसे बहुत छोटा सा नॉलेज है मेरा, रिसर्च बेस्ड है। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं, बहुत सी रिसर्च हो चुकी है एंड वो प्रूफ भी हो चुकी है। आपकी स्किन भी इम्प्रूवमेंट होती है और आपकी एजिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, बिकॉज दे वाले नॉलेज कि जब आप कोलेजन को सपोर्ट करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, जो भी व्हाटएवर इट इज, यू गेट योर इम्प्रूवमेंट इन योर स्किन। तो इसलिए ब्यूटिफिकेशन के लिए तो नहीं यूज करूंगा वर्ड, आई वुड यूज वाइटनिंग के लिए। आई मीन टेम्परेरी यू आर बी ए वाइट using some remedy, but then again I would say these are all are temporary. The beauty is again in your heart and mind. Thank you. I welcome Madam Abiha Hamid. Thank you for joining us. She is Vice President, Faisalabad Women Chamber of Commerce. Madam, we are discussing the standard of beauty. So I would like your opinion to what is your standard of beauty? How do you call beautiful? Both of you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पहली चीज़ तो ये कि स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी बेसिकली तो मेरे नज़दीक सिर्फ ये है कि आप दिल से खूबसूरत हुए और बज़ाहिर शक्ल से नहीं मैटर करता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, क्योंकि हमने एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं पाकिस्तान में और इंडिया में एंड बांग्लादेश, स्पेशली इन दिस रीजन, कि रिश्ता करना है तो बच्ची गोरी हो और लड़का लंबा हो और दाने ना हो and everything else. This is, I think, very controversial and very conservative approach, to be honest. So I think we have to get out of this stupid thinking, to be honest, and we have to move forward. तो जो आपके यहाँ पे officials हैं skin care products के भी, and even the doctors, I would say कि please recommend this to your patients as well, to get out of this phenomenon, because it affects you psychologically, especially जो बच्चियां हैं उनके तो आई थिंक इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स कंसिडरिंग दैट दे हैव टू रेज अ होल फैमिली, और 4 या 3 बच्चे हैं अगर उनको रेज करना है, इट्स लाइक रेजिंग अ नेशन। तो हम अगर एक मदर साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होगी तो हाउ कैन वी रेज द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन? वो तो वही सारी बातें उनके ज़हनों में भी बैठती जाएंगी, एंड दिस इज हैपनिंग, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ओके मैडम, योर टर्न। इसी चीज को इंडोर्स करूंगी कि बनाने वाले ने तो हर एक को खूबसूरत बनाया। सो अगर आपको कोई खूबसूरत नहीं लग रहा तो या अपनी आंखें ठीक कर लें या अपना सोच को चेंज कर लें, अगले को मत फोर्स करें। Very well said. Thank you so much for your opinion. Sir, my next question is from you, Dr. Arifan. In your clinical practice, you see a lot of patients presenting with visible dermatosis, like many much skin manifestation. But what do you see? Patients are more concerned about their disease, or how will society see them? What is more concerning for them, and why is it so? I think there is a obsessional thinking of the parents about their daughters. So that makes a lot of our cosmetic practice. So, but as I have told in my previous session here, that I give them hope. I don't say that don't worry, she is okay, ye wo. I do counseling. I tell them to, and I also give them hope. But this is a real problem, real challenge. The mother is much more worried about their daughter. From the 1 साल की बच्ची होती है और मदर लाती है, वो थोड़े फिंसी की बजाय उसको फिक्र होती है कि डॉक्टर साहब ये इसका निशान ना रहे। Yes. Thank you so much, sir. My next question is from Dr. Shaukat Parvez. You have introduced for 8 patent products. One of you discussed recently. It's about how to improve the skin pigmentation and the skin whitening. But introducing these products, aren't we taking the society towards these discussions? The one who is not fair is not beautiful.
Sir, aren't we taking that society towards a discussion that who is not fair is not beautiful? Why would not accept the society on the color he or she has? Why this going towards depigmenting or without melanin more beautiful? Sir, if I clarify, जो हम debate basically last time भी हुई थी और वो it was like कि अगर आप किसी को in beauty standards पे पूरा उतरने में help कर रहे हैं, चाहे क्रीमें लगवा के या कोई procedures करके, so क्या ऐसा करने में आप उस जो background mindset है उसको reinforce नहीं कर रहे? It is right what you said. आपने सर confession कर लिया. No, actually, practically it's happened, but we used to give the product in the society because society needed, it's not needed, but it's demand. कि हमें गोरा लगना है, हमारी wrinkle नहीं होनी चाहिए. So on that basis, we have to work and produce something. So it's a need, not need, it's a demand of the society. Because ये actually दो schools of thought हो जाते हैं ना, एक वो जिसको हम बात करें, but we have to realize that it's a very idealistic perspective. जो भी हम कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया, ये बातें सारी बड़ी अच्छी हैं. बहू की तलाश में बहुत सारा अपना अंदर का आपको जो है ना mindset खुद बाहर आ जाता है. So actually, तो उसमें फिर ये है कि one school of thought ये है जो idealistic वाला, but the other school of thought says कि people want to conform to those standards. वो उससे नहीं रुकेंगे. So rather than कि वो कोई harmful चीजें use करें, you can give them the safer alternatives. और वो एक तरह से आप उनको help out करें. So that is one school. Yes, ma'am. जो हमारी research पर्सनल मेडिसिन इसी बेस पे है, अल्टरनेटिव पे हमने हर्बल मेडिसिन हर्बल हर्ब्स यूज किए हैं to save the skin from any side effects, and we started use now in the probiotics bacteria which produce Healthy products, healthy alternatives. Yeah, ascorbic acid and lactic acid and short chain fatty acid on the skin. So now the time has come to use the safer medicines. I think it's a trend in the West as well now, lot of trend, because they're looking for the alternative medicines. I think now that one sport, and I think we can go for the safe medicine for the treatment of the skin. Okay. I have already told you. डॉक्टर साहब, you can allow me, can I add something? जी देखें, ये दो अलग-अलग मसले हैं. Wrinkles is a separate issue. ये सबके साथ आएगा. ये एक ऐसा फैक्ट है कि no one can deny it. तो आप उसकी दवाई दें, it is acceptable. लेकिन गोरापन किसी किसी का मसला है. तो I think this is a bit racist. तो ये डॉक्टर्स को भी प्रमोट करना चाहिए कि wrinkle free medicine should be given. आप दें, क्रीम्स की भी रिकमेंडेशन करें, बट आई थिंक इसमें से थोड़ा सा निकल आना चाहिए. अब इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फेयरनेस क्रीम्स एंड एवरीथिंग. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस. एक्नी इज अ मेडिकल इशू, और ये इस तरह के कंसर्न्स में आई हैव अ मोल ऑन माय फेस, आई हैव एक्नी, दिस इज अ रेलेवेंट मेडिकल इशू. बट गेटिंग वाइटनेस क्रीम्स एंड फेयरनेस क्रीम्स और promoting them, क्योंकि some doctors do this. This is a very high and ethical issue. TV के अंदर भी आप देखें, जो ये companies launch होती हैं, they take the support of dermatologists अपनी product को ये commercialize करने के लिए और market करने के लिए. They do take support of doctors. आप लोग seniors हैं, obviously you have many staff and colleagues working in your capacities and in different hospitals. So I think you should give this education to everyone. All your staff and all your colleagues, and distribute it in your circles. You should get out of this fairness agenda. We should get out of this. You are right, but I think it is demand of the people. So what I recommend are that we should use the safe medicines, not arbutin or kojic acid, hydroquinone. Mostly company in the country and abroad, they are using this chemicals which are very harmful, carcinogenic rather. So what my research is based on a safe herbal base. So it is 100% safe. We have tested in all aspects.
safe and alternative way of treatment. Thank you. Sir, I want to add that we have to engage the patient. वैसे आप मैडम कह रही हैं ना, अगर आप पेशेंट को कह दें कि रंग वाइट नहीं हो सकता या अपीयरेंस बेहतर नहीं हो सकती या रिंकल्स बेहतर नहीं हो सकते, we will lose patient not for myself, for patient's sake. We have to engage and little bit improvement with say multivitamins or the treatment of acne or the treatment of the scars. If we engage the patient and we consult and take time, and I think this is the proper way of educating the patient. जैसे हमारी सोसाइटी में पहले लोग डिस्पोजेबल सिरिंजें यूज करते थे, डॉक्टर के पास आके ड्रिप लगवाते थे ऑन डिमांड. अल्टीमेटली शुक्र है अल्लाह का, ये दोनों चीजें आप फेज आउट जी, यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दिस, क्योंकि ये जो सिरिंज का सिस्टम खत्म किया है, यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दिस. जी 10 से 15 साल में बिल्कुल, खत्म इट हो विल गया. टेक अ लॉट ऑफ इसी टाइम. तरह आई होप इंशाल्लाह कि अगर मैडम तंजीला इसी तरह काम करती रही तो आइंदा 10-15 साल में ये वाइटनिंग क्रीमें खत्म हो जाएंगी. डॉक्टर साहब, वाइटनिंग क्रीम्स का तो पता नहीं, मैडम के पेशेंट खत्म हो जाएंगे. कभी भी वो कुछ आपसे मुलाकात होगी तो मैंने कहा जी दुआ करें कि ना ही हो, क्योंकि हमारे पास तो लोग तभी आते हैं when they have a problem. I think इरम से ऐड करता I want- है इस पे, क्योंकि जो आपकी लुक्स है उसका बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है आपकी सेल्फ स्टीम से, आपके कॉन्फिडेंस से. हम एज अ सोसाइटी वी आर इन द ट्रांजिशनरी फेज, हम चेंज की तरफ जा रहे हैं. जितना मेरे ख्याल से फेयर एंड लवली भी अब ग्लो एंड लवली हो चुका हुआ है, जो आज से अगर हम कुछ साल पहले देखें तो वाइटनिंग का चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन कंपैरेटिवली अब वो नहीं है. अब हम इन चीज़ों में चेंज की तरफ, जैसे सर ने भी कहा कि विद टाइम हम इसको जो है ना ओवरकम प्रॉब्लम को कर लेंगे. लेकिन जैसे साइकाइट्री में आप मेंटल हेल्थ अगर आपकी इफेक्ट हो रही है, आपकी सेल्फ स्टीम के इश्यूज आ गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें एट सडन डेवलप नहीं होती. चाइल्डहुड से ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो हम बुली करना शुरू करते हैं किसी की हाइट पे, कलर पे, नाक की शेप पे, किसी ना किसी चीज पे हमने नाम रखे होते हैं. और दिस इज वेरी कॉमन कल्चर इन आवर स्कूल्स, इन आवर सोसाइटी. ये बहुत कॉमन है. कालचू कह देना किसी को, फिरना, ठिगना, ये आप सबने नाम सुने हुए हैं. लोग ये थॉट्स लेके जब बड़े होते हैं तो देयर सेल्फ स्टीम गेट डिस्टर्ब, और वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं जिनके चाइल्डहुड से ये मसाइल चल रहे हैं. और वो ही इन चीजों को चेंज करवाना चाह रहे हैं, जिनके मैडम सेल्फ स्टीम और चीजों पे इफेक्ट नहीं होता, दे डिड नॉट बॉदर इवन टू कम. तो हमें इन चीजों को एज अ होल देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि हम इन प्रोडक्ट्स को बंद करें. हमें अपनी ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग, अपनी जो सोसाइटी में अवेयरनेस देनी है इन चीजों पे. नेचुरल पे, नेचर ने जो बनाया है हर एक को बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट बनाया है. तो इस चीज पे एम्फेसाइज करना और इन चीजों को लेके चलना ये बहुत टाइम टेकिंग है. और चाइल्डहुड से ही ऑनवर्ड, मैं तो यहाँ पे हमारी फ्यूचर मदर्स हैं, पोटेंशियल मदर्स हैं सब, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये पेरेंटिंग का एक पार्ट है कि आपने अपने बच्चे की लुक को एज इट इज एक्सेप्टेंस दिलवा के आगे चलना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ही उसमें कोई ना कोई फ्लॉ या चीज ऐसे पॉइंट आउट करते रहेंगे, तुम बैठे किस तरह हो, तुम पाँव कैसे रख रहे हो, तुम्हारी नाक कैसी है. एंड पेरेंट्स दे डू दिस, सोसाइटी करती है, घर से भी मसले शुरू होते हैं, फिर स्कूल में आते हैं, रिलेटिव से, एंड देन देयर प्रॉब्लम दे गेट बिगर देन देयर हाइट्स. तो फिर उनको उसके सॉल्यूशंस चाहिए. एंड देयर इज अ साइकाइट्रिक इलनेस विद द बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसको शायद आप पढ़ते भी हैं, जिसमें नॉर्मल उनके फीचर्स है, बट दे फील दैट देयर फेशियल फीचर्स आर नॉट नॉर्मल. और उसके लिए वो सर्जन्स की ओपिनियन और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं. और दीज आर द पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा जो है वो मेरे हाथ से अप्रोच भी करते हैं बहुत. तो इसमें साइकाइट्री का बड़ा डायरेक्ट लिंक है. तो इसलिए इन चीजों के मैनेजमेंट में, मतलब अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम करने की जरूरत है. एज अ पर्सन एक्सेप्टेंस दिलवाना, हम लोग तो अपने पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि भाई अपनी लुक को चीजों के साथ कैसे उसको जो है ना हमने एक्सेप्टेंस दिलवानी है, उनके कॉन्फिडेंस पे काम करना है, उनके सेल्फ एस्टीम को रेज करना है. दैट इज अ सॉल्यूशन कि वो इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं. Very well said, madam. So, indeed, the parents as well as teachers play a very important role from the very start to build the self-esteem among the students, so that when they grow up, they do not become a psychiatric patient who doesn't like his looks. Madam, I have another question. There is a term called first impression, and that impression is based upon the looks. So how can one take that
the scar on his her face and go to the society who quickly judge him on the basis of the scar? What can he or she do for it? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट Yes, इंप्रेशन, ये कहावत जरूर है, बट आपको लगता है इज दैट रियलिस्टिक अप्रोच? हम सबको पता है ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो इसलिए देखिए मैं आपको but all of us do build impression, first impression. उसमें इंप्रेशन अपना देखो, आपकी जो लुक है आई थिंक उसको अच्छे से कैरी करना, अपनी कॉन्फिडेंस, हमने सबसे पहले जो बात की कि ब्यूटी इन द हार्ट, every act reflect on your face. मैं आपको ये जो है ना चीजें इस्लाम में भी है ना कि दिल स्याह हो जाता है, एक्चुअली what happened, जो नेगेटिव इमोशंस है they come on your face, आपका माइंड का स्ट्रेस जो है वो आपके फेस पे आ जाता है, ये तो मेडिकली भी प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। इफ यू आर स्ट्रेस्ड आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, तो अपनी लुक को जो है वो सबसे जो बेहतर प्रेजेंट करने का वे है, दैट इज ओवरकम योर एंजाइटी, बी कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर यू आर द बेस्ट एंड प्रेजेंट इन द सेम वे। डजंट मैटर, अगर चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी तो फिर आपको अगलों की परवाह भी नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ पे जो है ना बिल्ड करना है अपने आप को, और अपनी सेल्फ को जो सेल्फ बिल्डिंग है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो अपने सेल्फ से, तो फिर अगर आपको कोई पर्सन कहेगा तो यू विल स्टॉप दैट पर्सन के डोंट इंटरफेयर माय स्पेस, ठीक है। अगर आप खुद से ये अंडर कॉन्फिडेंट है कि मेरा स्कार है, तो वो स्कार फिर आपको यही लगना सारे आपका स्कार देख रहे हैं, तो इट एक्चुअली हैपेंड एंड रिलेटेड विद योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड सेल्फ एस्टीम। सर मैं ये ऐड करूंगा, उस कार के लिए तो कोई कवरिंग होनी चाहिए, कोई जो कैरी मास्क वगैरह के साथ, हाँ उसको आप थोड़ा सा 5-7 मिनट में, वो अगर इतना प्रोमिनेंट है ये वो जो हर बंदा पॉइंट आउट करता है, तो उसको तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट जो आसान तरीन है वो ये है कि उसको कवर कर लें, मतलब फाउंडेशन के साथ कैरी मास्क या कोई कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज होना चाहिए। जैसे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, बट आई थिंक मोर देन दैट, अगर क्योंकि ऑलमाइटी ने हमें ये भी इजाज़त दी है कि हम ट्रीट करवाएं, अगर हम बीमार हैं या कोई स्किन का इशू है, वी हैव टू गेट द ट्रीटमेंट, सो इट्स नॉट प्रोहिबिटेड। इसके साथ जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, और ट्रीटमेंट मीन मेरी रिकमेंडेशन है नेचुरल, उसमें आप चाहे दही यूज़ करें, आई मीन हनी यूज़ करें, वट एवर यू लाइक, any remedy. Another thing, your take home message from me is your self confidence and positive thinking that will reflect your personality. Thank you. देखिए इसमें वो जो वतवासो बिल हक वाली बात है ना, हर अच्छी और हक बात में हम एक दूसरे को वी हैव टू जॉइन हैंड्स। तो आप जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, उस पे बड़ा वेरिएबल होता है कौन कितनी ब्लोज बर्दाश्त कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये बात हो रही होती है ना, और राइट फ्रॉम, जैसा पहले मैंने कहा था, डे 1 पे जब बच्चे के पैदा होते ही वो एक कमेंट्री शुरू हो जाती है। तो आप जहाँ पर भी कमेंट्री सुने, वहाँ पे हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरे को रोकें और एक दूसरे को याद कराएं कि देखिए वी हैव नो राइट कि हम अल्लाह की क्रिएशन में इस किस्म के नाउजुबिल्लाह नुक्स निकालें। और ये अगर आप गौर करें, इट्स अ ह्यूज थिंग कि एक तरफ कहा जा रहा है कि ही इज द अहसनुल खालिकीन, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं ये नाक बाप पे चली गई और रंग माँ पे चला गया, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वो तो जाएगा, जीन्स है ना, तो वो कोई यहाँ से आएगी तो वहाँ से आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद भी ये याद रखें, और हम अपने इर्द गिर्द जब भी इस तरह की कन्वर्सेशन सुने तो हम स्ट्रांगली लोगों को रोकें। देखिए हमें ये हक नहीं है कि हम अल्लाह की बनाई उस बंदे की नहीं, देखिए जो चीजें आपकी अपनी बनाई हुई है उस पर तबसरा किया जा सकता है, ठीक है। सो मेरे बिहेवियर पे आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे, लेकिन मेरे रंग पे अगर आप कोई बात करते हैं तो आप मुझे नहीं कह रहे, आप खालिक को कह रहे। अगर आप ये सोचे तो थोड़ी देर के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाने के, अल्लाह को कह रहे हैं कि नहीं ये ना शेड थोड़ा डार्क कर दिया आपने, ये जरा लाइटर होता है इस तस्वीर में। और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ आप सिंपल एक बहुत ही आम से आर्टिस्ट को कह के देखिए कि तुम्हारी इस पेंटिंग में ना तुमने ब्लू जो लगाया है इसकी बजाय ये होना चाहिए था, और फिर आप देखिए वो आपको आगे से क्या जवाब, ठीक है।
अल्लाह का क्योंकि अल्लाह का ज़र बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सो वो अभी जो मतलब एक हमें कहने दे रहा है, वरना अगर वो चीज हमारे आगे आने लगे तो मैं ख्याल स्प्लिट सेकंड में वो हमें बता दे कि अच्छा इस कमेंट का मतलब क्या है। सो वी शुड ऑल बी वेरी वेरी केयरफुल किसी दूसरे की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को शेक करने से पहले बहुत। Thank you so much, everyone. Next question is, have you noticed that over the time, the trend, instead of improving, is declining? First, females are conscious. Now, males are also conscious. Why so? Why, as a society, males are so much concerned about their baldness? जबकि baldness तो बहुत अरसे से है. Now, everyone wants hair transplant. Why so? ये तो प्रैक्टिकली मेरे साथ होता है कि वो पेशेंट का आता है जो माँ ही लेके आती है, बेटे कहती डॉक्टर साहब के तो अपने बाल गिरेंगे। लेकिन मैं वो उसके लिए अपने आप को अपने कंपोज रखता हूँ। मैं आपको कहता हूँ बेटे मेरी उम्र भी तो 62 हो गई। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप देखते 35 चांसेस हैं शायद मेडिसिन से कुछ फर्क पड़ गया। वो बात वही है बेटे को 1.5-2 माह के ट्रीटमेंट में उसी में काउंसलिंग शामिल है। डेफिनेटली उनको पता लग जाता है कि रियलिस्टिकली क्या होना चाहिए, कहाँ तक जा सकते हैं। बाज लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाज को तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियां ने तुम्हारी शेप में यही हेयर स्टाइल फिट बैठता है, अगर तुम इसकी बजाय को और करने की कोशिश करो तो फिट नहीं होगा। लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी जरूर होती है जिनके बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि मेरे लगने चाहिए, तो वो आप उसको फिर रेफर कर देंगे लगवा दे, कोई उसमें वर्ज नहीं है। Sir, it's just one example. Even the males are so much concerned about their acne, their melasma, which in the past was not. Is the social media playing the role? इसमें वो जैसे डॉक्टर इरम ने कहा ना, बुलिंग का बड़ा रोल है। उसके ऑफिस में उसकी माँ को या कोई 2-4 जगह रिश्ते की बात चली है, नहीं सिरे चढ़ी, वो समझते हैं कि शायद खानों की वजह से नहीं चढ़ रही। Yes, sir. ये ठीक हो जाए। Yes, और thank you. इसमें अगर देखें एक्ने मेलिस्मा दीज आर द प्रॉब्लम्स ना, तो आई थिंक इनको तो ट्रीट होना चाहिए और इसके लिए मैनेजमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज WHO की जो डेफिनेशन भी है ना वो है फिजिकल साइको सोशल वेलबींग। But the patient that comes, he is not, but like he is very much afraid of the society. He doesn't come for his own concern. डॉक्टर सलीम गौरी ने बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी मेडिकल एथिक्स पे। देन आपका बीइंग डॉटर इट्स योर ड्यूटी, ये जस्टिफाइड है, आप उसके मेडिकल एथिक्स को लेके चलेंगे तो आप उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं कि आप अनड्यू तो नहीं कर रहे, ओवरड्यू तो नहीं कर रहे, उसको वाकई जरूरत है, उसकी कितनी प्रॉब्लम है और कितना उसको मैनेजमेंट चाहिए। आई थिंक अगर आप एथिक्स को पॉइंट आज की प्रेजेंटेशन जो है उसको माइंड में रख के ट्रीट करें तो फिर आप उसे यहाँ काउंसल करेंगे या उसे वाकई मैनेज करेंगे अगर वो जरूरतमंद इतना है तो। इसमें ऐसे मैं ख्याल है कुछ एक चीज हमें आई फुली एग्री, बिकॉज अब सर भी एग्री करेंगे कि पहले मेल पेशेंट्स इतने एस्थेटिक कंप्लेंट्स के साथ नहीं आते, और आप जब लिटरेचर भी पढ़ते थे ना तो उसमें लिखा होता था कि फीमेल्स में ये परसेंटेज ज्यादा है, प्रोबेबली बिकॉज वो प्रेजेंट ज्यादा करती है डर्मेटोलॉजिस्ट को। लेकिन ओवर द लास्ट 1 decade आई फुली एग्री, वी आर नाउ सीइंग मोर एंड मोर मेल पेशेंट्स हु आर नॉट एग्जैक्टली पेशेंट्स बट दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस, ये रंग का भी और इस तरह की सारी चीजें, और उसमें सोशल मीडिया का भी एक रोल है। एंड इन जनरल इफ यू लुक एट दिस, वो जो हम कहते हैं ना, जो आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रही थी, इन जनरल जो हमारा डिक्लाइन है सोसाइटी में, हमारे मुल्क में भी और ग्लोबली भी, वो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें सुपरफिशियल थिंग्स के ऊपर। तो वो जो आपकी इन जो डेप्थ, विजडम और वो स्पिरिचुअलिटी जैसे जैसे डिक्लाइन कर रही है ना, आप हर चमकती हुई चीज के पीछे भाग रहे हैं। और ये यूथ है, और अभी इंडोनेशियन एम्बेसडर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एहसास दिलाया कि हमारी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी इस वक्त यूथ है। तो मेरा सवाल है अपनी उम्र के लोगों से कि इस यूथ को हम क्या दे रहे हैं ऐसा जिसपे, जो कि एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में हम कह सकें कि हाँ हमने इनको बहुत अच्छी बुक रीडिंग की आदत डाली है, बहुत अच्छा लिटरेचर इनसे शेयर किया है, या इवन कोई मतलब कोई एंटरटेनमेंट की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, स्पोर्ट्स दिया हुई, जब ये बिहा कह रही है टिकटॉक दे दिया है, हाथ में मोबाइल्स बचपन से पकड़ा दिए हैं, तो अब वो क्या करें? वो उनको ये पता है कि स्टैंडर्ड ये है कि किस तस्वीर पे कितनी लाइक्स आई है, दिस इज देयर सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, एंड देन देयर आर फिल्टर्स टू चेंज यू इमीडिएटली। सो आप जब फोकस ही इतनी सुपरफिशियल चीजों के ऊपर कर रहे हैं तो आप कैसे फिर इसमें हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है। यस आई एग्री, अब बॉयज, इवन बच्चे, एवरीबडी
is now part of this thing, or part of this. Now actually we are all facing the mental brunt. तो हमारी सबकी mental health जो है ना अब वो बुरे तरीके से affect हो रही है. Well, yes, ma'am. But another thing is the aesthetics. It's like every other dermatologist is now aesthetician. And with that, Botox, fillers, plastic surgery, skin changing procedures are becoming so much common that every other person wants a Botox. How can we set the limits that this person should get it and this should not? Because everyone who sees at the TV, he or she doesn't know the indication. He just want to get that because they think that will the Botox, their age will revert 10 years back. So how can we deal with these unrealistic expectations of the patient towards the doctor? I have a small suggestion. जो doctors हैं in this country, mostly people prefer to go to private doctors. They don't go to government institutes. आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके मसला मेंशन करें, नो वन विल आस्क यू कि यहाँ आपका बोटॉक्स कर देते हैं, आपकी सर्जरी कर देते हैं. इलेक्टिव सर्जरीज शुड नेवर बी प्रेफर्ड, शुड नेवर बी रिकमेंडेड. लेकिन ये जो प्राइवेट है सेक्टर, आई हैव नोटिस्ड के ऑब्वियसली इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस. तो कितने डॉक्टर्स की वजह से बाकी जो सही काम कर रहे हैं उनका भी नाम खराब हो रहा है. और ये एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग इंडस्ट्री. पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. You can see any actresses and everyone, they are having millions of dollars wasted in this procedures. और एक वो एक ideals set किए हुए हैं आवाम ने भी actors को, models को देख के कि हमने ऐसा बनना है. We have to follow them. Our ideal person is doing this job and we have to do this. तो इसके अंदर कुछ ज्यादा पार्ट यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी का है. Like go to America, आप उनके systems जाके देखें जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के हैं. The hospital pays the doctor. You don't go, to the private clinics. तो वहाँ पे डॉक्टर्स को लालच नहीं है, वो डॉक्टर्स वहीं पे उसके अंदर सिस्टम के एम्बेडेड हैं. तो उनके पास एक पेशेंट आता है या 10 आते हैं, रात के 2 बजे आता है या दोपहर को 2 बजे आता है. देयर इज नो सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस, हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लें. एक इंश्योरेंस के सिस्टम पे वो चल रहे हैं. बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो कंसिडरिंग पाकिस्तान. वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि यहाँ पे जो अच्छा काम करें डॉक्टर्स, they keep working, and people को awareness करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. As a nation we have to realize and we have to identify the problems के हम socially एक दूसरे को uplift नहीं करते. If a friend comes to me और मुझे बताया आके जी I am getting a liposuction after 2 days, I have to I have to ask her, I have to suggest her कि please don't do this to yourself. This is not appropriate. This is not the way to go about it. तो ये एज अ मुआशरा हमें ये करना चाहिए कि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें. पहला तो स्टेप ये है, इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये लेके चलें, क्योंकि आई डोंट थिंक कंसीडरिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, टू बी ऑनेस्ट. तो कोई भी हुकूमत आए, वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ. और जो अवाम अपने आप को नहीं उठाती, उनके हुक्मरान कुछ नहीं करते उनके लिए. तो ये एक छोटे लेवल पे इंडिविजुअल बेसिस पे हमें एक एक करके अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए कि हम कहाँ से लेके चल रहे हैं. और दूसरों से एक्सपेक्ट मत करेंगे कोई आपको आके गाइडेंस कर देगा कि जी ये सही है या गलत है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. Thank you so much, everyone. Now, to wind up this discussion, I would like to know your opinions. What is the take-home message for this society? How they should take the looks, and how much they should take the power of looks onto themselves? I will just say one thing, and then I'll let them all continue. Sure. देखिए कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल ले लें, इवन इन दिस हॉल, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग, बट कुछ अक्लमंद हैं और कुछ बेवकूफ हैं. ठीक है, और उन बेवकूफों ने भी किसी टाइम पे बूढ़े होना है. और ये वही बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. किसी अहमक ने लिख के दे दिया और सारे उसको फॉलो कर रहे हैं. इतनी सी बात है. Madam, your turn. मैं तो आई एग्री विद दीना, और मैं ये अगेन नहीं कहूँगी कि आपको बिगर पिक्चर देखनी है ना. सो आपको ये याद रखना है, और आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, इतना अच्छा इन्होंने आज कोट किया. तो आप देखिए, अगर आप जिल्द का लफ्ज जो है जलूद कुरान मजीद में है, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे क़यामत वाले दिन का बड़ा अच्छा मंजर कशी की हुई है. और वहाँ पे बताया गया कि तुम्हारी स्किन्स जो है वो गवाही देंगी. ठीक है, और वो गवाही देंगी तो अगेन आप मतलब खुद भी वो बंदा कहेगा कि अपनी जिल्द से कहेगा कि तुम क्यों बोल रही हो, तो वो कहेगा कि मैं अल्लाह के हुक्म से बोल रही हूँ. तो स्किन इज दैट ऑर्गन जिससे क़यामत वाले दिन गवाही देनी है. तो मुझे इतना खौफ आया सोच के कि अच्छा वहाँ पे पेशेंट्स की स्किन जब बोलेंगी
तो उन्होंने अगर कहा ना कि वो मैं तो अल्लाह के हुक्म से हम तो बूढ़ी हो रही थी और ये जो खड़ी हुई है ना, इसने हमारे अंदर ये टीके लगाए और इतना पैसा, एंड देन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये आंसर कैसे करेंगे कि आपके मुल्क में इतने लोग थे जिनको 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लोग नंगे पांव फेर रहे थे। स्पेशली आप अब इस वक्त देखें कि जो फ्लड्स के अंदर लोगों की सिचुएशन है, उसको आप कंपेयर करें कि आप few thousand रुपीस में जब आप किसी को देते हैं तो उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो आप याद रखें, और फिर आप सोचें कि हम अपने कपड़ों के ऊपर, जूतों पे, और अब तो ये इन प्रोसीजर्स के ऊपर हाउ कैन वी, मतलब बहुत हौसला चाहिए इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस और लैक्स ऑफ रुपीस इनके ऊपर खर्च करते हुए हमें जवाब देना। तो वो जैसे उन्होंने कहा था कि यस अल्लाह की नेमत है और वो अल्लाह की नेमत का शुक्र भी अदा करें, वो आप पे नजर भी आनी चाहिए, बट इनमें से ज्यादातर चीजें कहीं ना कहीं इसराफ में जा रही हैं, एंड आई थिंक इसमें भी हमें we have to be open about it. It's not कि हमारा प्रोफेशन, कमर्शलाइजेशन, इकोनॉमी, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सब के अंदर बेतहाशा लोग वो भी हैं जो रोटी को तरस रहे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं. So we have to give this answer soon enough. Dr. Shakir, your turn. मैडम ने जैसे कहा कि शुगर करना चाहिए, मेरे ख्याल हम सबको ये भी देखना चाहिए हम बहुत बेहतर है। आज लोगों की हमारे ही वो ह्यूमन बीइंग है, हमारे भी दोस्त हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी के कोई मिसिंग है, तो ये चीज़ें भी आपको ना कॉन्फिडेंस देती है। तो आप वही कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी जहन में रख के तो आप चलें। दिस इज द ओनली मैसेज विच आई वांटेड टू कन्वे के बी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस that will promote your personality. Positive thing. मेरे ख्याल में इसका हल वही काउंसलिंग है और हमें और उम्मीद रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जैसे जैसे हमारी कौम में तालीम बढ़ रही है तो ये चीज़ फेज आउट हो जाएगी, लेकिन हमें हम सबको इसमें रोल प्ले करना चाहिए जी कि पेशेंट्स को हम यही समझाएं, रिफ्यूज़ नहीं करें, पेशेंट को एंगेज कर लें, लेकिन वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें और हिसाब वाला ज़हन में रखें कि अल्लाह को हमने जवाब देना है कि कितना चाहिए था, कितना कम ने किया और क्या हमने पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी कि नहीं दी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स या बाकी चीज़ों के बारे में अगर हमने वो भी बता दिया है और पेशेंट को एंगेज भी कर लिया, एजुकेट भी कर दिया है, तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बहुत पॉजिटिव जो है ना डॉक्टर आरिफ ने कंक्लूड की ये चीज़ कि वाकई में अगर हम पॉजिटिव अप्रोच एक जैसे हम पेशेंट की एथिक्स को सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो आज हमने पढ़ ली है ना, डॉक्टर सलीम गौरी ने बहुत अच्छा जो पढ़ाया है, अगर उसको माइंड में रखते हुए आप जस्टिफाइड हैं अपने पेशेंट के साथ, उसके हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो डॉक्टर आरिफ की बात की इंशाल्लाह अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बहुत अहम है। तो लाख बेहतर है ज़माने की खबर रखने से, लाख बेहतर है ज़माने की खबर रखने से एक ही शख्स के हर दुख से शनासा होना। पेशेंट जब आपके पास आता है तो प्लीज उसको होलिस्टिक देखें, आप दिन में 10 मरीज ना देखें, एक देख लें, अच्छे तरीके से देख लें, उसको फैज दे दे, अल्लाह ताला उसको ही कबूल कर लेगा। इबादत समझ के मरीज देखें, जैसे इबादत समझ के हम दिन में नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, तो अपने पेशेंट को इबादत समझ के करेंगी तो आप लोग बिल्कुल जस्टिफाइड होंगे और ट्रूली उसको जो है ना देखेंगे। एट दी लास्ट लाइन में जो अब तक बात हुई है आर्टिफिशियलिटी, मुझे लगता है मेरे बेटे के ना स्कूल में था ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो बड़ी मॉडर्न ग्रैंड मदर्स थी, मैं परेशान हो गई। अ ग्रैंड मदर शुड बी लुक लाइक अ ग्रैंड मदर, मतलब मैं तो कहती माओ को भी माँ की तरह नजर आना चाहिए, नॉट अ मॉडल। ममता नहीं नजर आती उसमें, तो बी नेचुरल, जितने नेचुरल लुक चीजें आप अपनी अम्मियों को देखोगे तो आपको अपनी अम्मी सबसे अच्छी लगेगी, चाहे आप सारे बच्चों की मॉडल मम्मियाँ होंगी, तो बी नेचुरल और आर्टिफिशियलिटी को कंडेम करना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much all the worthy panelists for your precious time. Thank you so much. Raju.